Assalamu alaikum dear students of class 10th. This is your computer science lecture. You are doing chapter number 1 and the topic is extensive question answers which are given on page number 29. Students, your question number 8 is you have to write an algorithm and draw the flow chart for the given sequence. In the sequences you have to find the product, and sequences 1 multiplied by 3 multiply by 5, 7, 9, 11, 13 and 15. Before moving to algorithm and before drawing the flow chart, what we need to do, we need to understand the general pattern given in the series. If you notice that it is the series of odd numbers, that means 1 में 2 numbers add हो रहे हैं, so it will become 3. Then again addition of 2 numbers, that will become 5. Then again addition of 2 numbers, that will become 7. So this is the general pattern of the given series. Now let's start with the algorithm. We already know that algorithm is a step-by-step procedure. We need to clarify each step very clearly, starting with the step 1 always as start and the last step always as stop. So step 1 is start, then we have to input the numbers. We are doing the algorithm first. Step 1 is always the start. Second step is to input the number. What I have taken number to variable to denote the number is n. N is equals to 1. Why n is equals to 1? Given in the series, starting from the 1 ending with 15. So that's why I have chosen n is equals to 1. You can give this n another name as well. आप इसे किसी और n से भी नंबर से भी डिनोट कर सकते हो, किसी और अल्फ़ाबेट से. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी m, it can be a, it can be b or any other alphabet which you like. Step 3 is to find the product. So in product means you have to find the product again and again till the series is completed. So that's why we will multiply the answer of our product with the number that has been taken. So product multiplied by n, the answer will be saved in the product. Again I have taken it as a variable product. आप इसे p से भी डिनोट कर सकते हो, आप इसे pr भी लिख सकते हो और any other thing which you like, but the name should be suitable. Then the fourth step is n. N was 1 actually. In the first step our n was 1. Then we are increasing 2 digits into it, so it will become 1 plus 2, that will become 3. Now you can see कि अब हमारी सीरीज़ कैसे कंप्लीट हो रही है. हमारे पास यहाँ 1 था, 1 plus 2 जब हमने किया it has become 3. Next step is if n is greater than 15, go to step 6, otherwise go to step 3. अगर n 15 से बड़ा हो गया है तो step 6 पे move कर जाओ. Why to move on step 6? Because we need to output it. But if it is smaller than 15, then go to step 3. And step 3 is to find the product. And why we have written 15 over there? Because our series last number is 15. That's why we have put the condition that the number should be less than 15. जब वो 15 से बड़ा हो जाएगा तो बस हमने आउटपुट करवा देनी है. So our algorithm will again move to the step 3. It will again find the product and it will save it in the variable product. Then again it will increment it. अब आपकी स्टेप में आपकी वैल्यू 3 हो गई थी, 3 में अगेन आपका इंक्रीमेंट होगा, the value will become 5 and so on, and it will work until your value becomes 15. In step 6 you will output the product, and in 7th step you will
stop. This is how you will find the product of the given series. Once the algorithm is drawn, we all know that it becomes very easy to draw the flowchart. I have just mapped all the steps of the algorithm in my diagram like this. So have a look on the flowchart as well. Step 1, start. Here it was a start as well. But यहाँ पे हमने अपनी shapes का बहुत ख्याल रखना है. Then parallelogram we are going to input our number. Input n is equals to 1. यहाँ पर भी हमने ये किया, input n is equals to 1. Next step was of processing. We know we have to put the processing in the rectangular box. So यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए p यूज़ किया है. p is equals to p multiplied by n. Same process, same thing. But I have changed the variable name. You can also change it or you can use the same. It's up to you. Then fourth step, n is equals to n plus 2. Again it was a processing, that's why I have put it in rectangular box. Then it was a condition, if n is greater than 15. We know conditional statements will be put in a diamond with the question mark. So n is greater than 15 question mark. Your diamond represents that it is asking for a condition if it is greater than 15. So if the answer is yes, it will output the p. Again we will output our product or p in the parallelogram, and if the answer is no, we will move to step 3 as written over here. And the last step is to stop. जैसे हमारा एल्गोरिथम में हमने स्टॉप करना है, वैसे हमने अपने फ्लो चार्ट में भी स्टॉप कर लेना है. So this is how your flow chart will be drawn and your algorithm will be written for the given series to find the product. Now move to the next question, question number 9, which says write an algorithm to print multiplication table of a number in reverse order. अब क्या वो आपसे कह रहे हैं, you have to print the table but in reverse order. नॉर्मली अगर हम लोग टेबल देखें तो टेबल हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ होगा. इफ़ आई एम राइटिंग द टेबल ऑफ 2, सो वो इस तरह से लिखा हुआ होता है आपके पास. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2. देन अगर हम लोग 2 का टेबल रख रहे हैं तो 2 विल रिमेन कॉन्स्टेंट. द नंबर विच वी आर मल्टीप्लाइंग इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. इट विल बी incremented by 1. Then 2 multiplied by 2 is 4. Then 2 multiplied by 3 is 6. Up to so on. 2 multiplied by 10 is 20. So the जिस नंबर का भी हम लोग टेबल रख रहे होते हैं वो नंबर कांस्टेंट रहता है. हमारे पास सीरीज़ में क्या हो रहा होता है, एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा होता है इन ईच स्टेप. अगर मैं इसे टेबल को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो फिर क्या होगा आप लोगों के पास. It will be written as 2 multiplied by 10 is 20, 2 multiplied by 9 is 18, 2 multiplied by 8 is 16, up to so on. हम लोग 1 तक जाएंगे. 2 multiplied by 1 is 2. So this is a reverse order. In reverse order we have the same condition. हम जिस नंबर का भी टेबल लिख रहे होंगे वो नंबर हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहता है. So we can denote this number with n. अगेन ये वेरिएबल मैंने नाम अपनी मर्ज़ी से दिया है. यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. हमारे पास जो नंबर चेंज हो रहा है इसको मैं डिनोट कर देती हूँ आई से. n मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल्स टू टी. फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यूज़ मैं सेव करवा रही हूँ अपनी t में. मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने t लिखा है. सो व्हाट नाउ वी आर डूइंग इज n विल रिमेन कांस्टेंट, I will be decremented in each step क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने हैं. एंड देन वी कैन सेव द रिजल्ट इन आर वेरिएबल t.
So let's move how to write the algorithm exactly. Algorithm. Step 1, start. Step 2 is input the number, जिसको हमने n से डिनोट किए. हमें नहीं पता हम किस नंबर का टेबल लिख रहे हैं, हमें सिर्फ उन्होंने ये कहा कि राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर. सो नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वी विल ओनली डिनोट इट विद n. देन इनपुट i इज इक्वल्स टू 10. हमने i को 10 के इक्वल क्यों लिया है? बिकॉज वी हैव टू प्रिंट द टेबल इन रिवर्स ऑर्डर. So I will be taken as 10. Step 4 is to multiply both the numbers and save it in some variable. So I have taken it as t. T is equals to I multiply by n. Then output t. जो result आया उसको हमने output भी तो करवाने हैं. That's why we'll say output t. Next step is to decrement the value of I की वैल्यू हमने 10 ली हुई थी. In next step we need to decrement it. So in this step our value of I will become 9. Then the next step will be if I is less than 1, go to step 8, else go to step 4. अगर I की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है तो फिर हमने मूव करना है अपने लास्ट स्टेप पे, which says us to stop. But if it is greater than 1 or if it is equals to 1, then again move to step 4. और step 4 में हमारे पास again वही सारी प्रोसेसिंग होगी, दोबारा से आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी, दोबारा से आपके पास आउटपुट का रिजल्ट आएगा और एक बार फिर आपका डिक्रीमेंट होगा. स्टेप बाय स्टेप ये डिक्रीमेंट होता रहेगा फ्रॉम 10 till 1 and in last step it will stop. Let's draw its flow chart. अगेन फ्लो चार्ट में हमने स्टार्ट लिया. वी हैव इनपुट n and I is equals to 10. Then t is equals to I multiply by n. We have put it in a rectangular box because it is a processing. Then output t. इनपुट आउटपुट को हम लोग पैरेललोग्राम में शो करेंगे. आउटपुट t हमने करवा दिया like this, जैसे स्टेप 5 में यहाँ पे हमने किया था. देन I इज इक्वल्स टू I माइनस 1 हमने किया स्टेप 6 पे. फिर हमने अपने डायमंड बॉक्स में कंडीशन लगाई I इज लेस देन 1 क्वेश्चन मार्क. इफ़ द आंसर इज येस देन स्टॉप. इफ़ द आंसर इज नो go to this step which asks you to multiply I with n. So students, this was our today's lecture in which we have covered question number 8 and question number 9. I hope it was easy for you and you have understood it. Thank you.